Hello. Uh, yeah, just give me a react if my voice is audible. या आवाज़ आ रही है मेरी? Yeah. Okay, great. So yeah, we'll be just starting the live. We are going to have Mr. Ankit soon. Just in a minute, we'll be starting. So I'll request you all. So if your friends are not here, you can just contact them and tell them that the session is going to start, and it's going to be a really amazing session. So just don't miss it. Right. And we are just going to have Ankit sir. Okay. Yeah, am I audible? Okay, I guess I'm audible. Okay, so we'll just start in 2 minutes. Let's wait for 2 minutes. Yeah, so Akshasani, yeah, we'll be having Ankit sir and we'll be discussing on all these things. Right, so just wait patiently. We'll be just starting in 2 minutes. Hello, hello. Yeah, so, okay. I think, guys, we have Mr. Ankit with us, and yeah. Hello. 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 Welcome, sir, to the channel. How are you? I'm good. Thanks for having me. Great. Yeah, thank you so much. So, let's start the session. Guys, today we have Mr. Ankit Mehra, who is the co-founder and CEO of Gyanvan. Gyanvan helps users to facilitate easy education loans and scholarships. Every year, thousands of students are not able to reach their full potential due to lack of reasonable financing. So basically, Gyanvan helps them all. Mr. Ankit did his bachelor's from IIT Kanpur in 2007, and then he did his MBA from IESC Business School. So it's great to have you here, sir. And let's start the session. I'll also give a short introduction about myself. My name is Aman Agarwal, and I'm a final year UG student from the Department of Material Science and Engineering at IIT Kanpur. Presently, I'm the community manager at Financially Aware Bharat. So it's great to have you here, sir, again, and let's go with the live. So, how are you, sir? Like, how has it been? It's been a good journey so far. I mean, I think at Gamblen, so as you said, I think Gamblen, we started the company with a mission that students should not have to rely on parental property or merit should be the one of the determinants to get a loan or to pursue higher education. It should just not be how much money your parent has. That should not be the only driver whether you can avail higher education or not. So now we've been on this journey for the last 8 odd years. Yeah. I would say we've just gotten started because there is still a lot to do and we have barely scratched the surface. And I saw on Insta like someone message कि हिंदी में बता दो तो हिंदी में भी बता सकता हूँ बिल्कुल. कि हमारा उद्देश्य यही है कि मतलब
किस बच्चों को अपनी काबिलियत के हिसाब से पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पिताजी के पास इतने पैसे हैं या मेरे पिताजी के पास इतनी प्रॉपर्टी है तभी मैं बाहर पढ़ने जा सकता हूँ या तभी मैं उच्च पढ़ाई कर सकता हूँ। तो यही उद्देश्य है Correct. कि उसको सॉल्व कर सके। एंड हाँ, आई मीन we've just started, as I said, the last year we've helped students get over 1600 crores in loans through different lending partners, uh, and hope to kind of triple that amount this year. But yeah, that's pretty much about us. In That's a really nutshell, what great, sir. Gyanthan does, is for any student that comes to us, we'll help identify the best loan for their profile and then help them get that loan in the shortest possible time. So that's really Hmm. what our core offering is. And we've currently focused on the study abroad segment, but we are also looking at the domestic segment at this point in time. Great, great. That's actually really helpful, sir. So, sir, you mentioned about two things, about like specifically about two things, loans and scholarships, right? Specifically education loans. So, even the today's topic is solving education financing problem in India. So what do you think? How basically this problem is prevalent in India, and what are the key aspects of it? Key after working after co-founding Gandhan, you must have interacted with a lot of students who want to Yep. pursue masters, maybe in India, maybe outside, maybe bachelors also. So what do you think is basically things behind it? Sure. So I think solving education financing itself is a pretty broad topic, and depending on which segment we pick up, we can go into long details, and I will. It excites me, so I can talk for long times on that. But if I had to summarize, the way we try to tell students is, let's say, if I want to go abroad, I need a certain sum of money. Now, how do I solve for that finance needs? One Hmm. obvious answer is, as I said, my father has or parents have the property, or I have basically sold a startup and have made tons of money and I can use my own personal funds. Right. But that does not happen to be the case with everyone. So, in Hmm. this case, what are the other alternatives? So, realistically, if we look at it, there are two or three different buckets. One is scholarships, as you mentioned. Hmm. Uh, One is TA-ship, RA-ship, or some kind of grant from the school, which will be kind of scholarships, but you have to work for it per se. And the third thing would really be education loans. Now, Hmm. historically in India, education loans, and the problem globally actually with education loans is the fact that compared to a car loan or a home loan, probably, home loan banks would give you because आप घर खड़ा किया है, home loan मिल गया है, worst come worst, I'll take back the home, repossess the home. Hmm. With education, it's a case of, it's like a project financing. मतलब कि मैं आप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 4 साल आईआईटी में पढ़ोगे, उसके बाद आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट होगी, उसके बाद आप लोन रीपे करना शुरू करोगे. True. So when I'm giving you a loan, I'm taking a bet कि you will do something, and that prediction is very, very critical. And that is something that lenders have traditionally not done, and that is why the simple answer, they've taken the easy way out कि मतलब इतना दिमाग क्यों लगाएं, and that is why we started it, was कि why should we even bother about it? I mean, we'll only give loans to people whose parents have property. So Genesis, if you look historically, it was just parent mortgage-backed loans. In the last Hmm. 6-7 years, now things have changed drastically. Today, if you're going abroad to a top-tier university, there are many unsecured options available, or loans Hmm. without collateral options available. So that's the thing. But yeah, I mean, I think in the decreasing order, I say first think about scholarships because it's free money. Then think about TA-ship, RA-ship, and then finally think about education loans per se. But realize that there is something like an education loans, and it's not. We are not no longer in the 2013 era when I first encountered this problem and I said that this is completely broken. Hmm. I wouldn't say it's been fixed completely, but yeah, we're definitely much ahead of where we were in 2013. Right, right. Actually, so since you mentioned about these things, so even right now I'm in my final year, so I've seen right from my first year, there are students around me who have taken education loans from whatever bank they were in. So there were multiple things that they used to do, like whenever they want to pay a semester fee or whatever. So there are lots of hustle you have to basically do. You have to go and fill documents and all those things. So इस चीज में would you like to comment कि जो technicalities जो प्रॉब्लम्स होते हैं आज के टाइम पे लोन्स को अवेल करते टाइम पे सो हाउ बेसिकली दिस इज ज्ञानधन सॉल्विंग एंड हाउ बेसिकली वी कुड get a better perspective towards this and have something better
apart from this? Sure. Uh, so, uh, so obviously there are a lot of hassles, and again, there is a reason why we started the company. There is a reason why we exist. If every True. problem was solved for, then there would be no reason for a new company to exist or startup to come about. Right. I think, and partly it's also to do with the fact that it's been a smaller portfolio for banks, so they themselves don't understand the products very well. In terms of the hassles that you mentioned, those are very true. As a matter of fact, as I said, I encountered this problem when I was when I had applied for my MBA to ESA Business School in Barcelona, and I suddenly saw a lot of students facing problems trying to figure out financing. And at that point in time, because I'd worked in a bank in the US, I thought we realized it just doesn't work. And that is what triggered the idea. But even then, I was living in my own ivory tower. I was thinking, ki, hey, if we build out the best model and give it to banks, ki, hey, bhai, this person has this probability of getting a job, or that person has that probability of getting a job, then things will be solved. I mean, why? It's not rocket science. We can solve this very simply. Right. It's only when we came back to India, Jainesh and myself, when we started talking to banks, when we started seeing things on the ground, and that is why startups it's always important to understand your customer and talk to your customer. We realized that, I mean, even folks whose parents had properties, for them to get an education loan was tough. So, I mean, the processes were so broken, and I mean, it's almost felt like banks were not willing to do education loans. And there are many reasons for that. Banks have almost historically been in a place where you walk to a bank and you say, hey, I want to open a savings account. They'll say, well and good. You want to say, I want to take a home loan. They'll be welcome. You want to say, I want to take an education loan. Their bias will be, आप अगली branch में चले जाओ. Yeah, मतलब, please. They'll try to create some form of fashion. And that is when we realized we are just talking ki, hey, we'll do this tech, we'll do this AI ML model will not really solve. We have to understand what are the actual pain points, and we have to solve for that. So what you mentioned around every semester we have to fill up forms and stuff. Mm-hmm. I think our intent, and again, as I said, we've not really looked at the domestic market as aggressively at this point in time. But if I talk about, hey, what do we want to do 2 years, 3 years out? The idea is all of this is straightforward. These are not really Herculean tasks. I mean, we have made many technological advances in everything. I mean, this is just a form fill. So it should be done online. So I think it will happen. It's just a case of whether a bank does it, or, as I said, a startup like us just says, hey, this is the process. Just use our services because we are so better than someone else. Exactly. Yeah, that's And that is the example I'll give with Paytm or anything else. I mean, banks have their UPI systems as well, but people use Paytm or people use some other services because bank servers don't work or bank APIs are failing. So that is the whole thing. That is a gap. Yeah, that's definitely a gap. So, since we were talking about education loans, so what we did before the live session, we had a survey. We actually asked our followers ki did they have any kind of doubt अगर कुछ आपको पूछना है अंकित सर से. So we got few responses on that, and there was one question ki how can basically one improve their chances of getting an education loan. So I think maybe you can just share something about this. Sure. So I'll give a high level idea, and I'll only focus on things we can control, because there are certain things I can't control. I can't control what my parental property is and so on and so forth. But things I can control. So number one is credit scores. Basically, what happens is whenever you take apply for a loan, a lender will check your credit history in a credit bureau. So what happens is any loan that you take ever gets reported to these bureaus. So in India, there are 4 credit bureaus. What they do is they have a history of you've taken a loan, at what rate, have you been repaying or not. So it's basically a history of your behavior. It's like a report card. So the best thing you need to do is repay all your debts on time. And the reason why I say that specifically for the student community is in the last 3 years or 4 years, there have been a lot of fintechs that have come about and said that, hey, we'll do this. You can split your payments in 3 or whatnot and 10, 20 different things. At the end of the day, most of those are credit products.
And what students don't realize is a lot of this is being reported to the bureaus. So even if you've taken, let's say, you've bought a mobile on 5,000 through some platform and you said, ki, okay, 3 months mein pay ho jayega, and then you forgot. Maybe you willfully did not pay, or maybe you forgot, plain simple. That is getting reported to the bureau in many cases. And if that has not been repaid on time, that affects your credit score. And that has an implication in terms of whether you get a loan or not. So the simple thing is these days, you can go to the bureaus themselves. So you can go to CIBIL and you can download the credit score, or you can go to one of these platforms like Bank Bazaar, Wishfin of the world, and you can download a free credit report. But everyone should look for the credit report for themselves, for the co-applicant. So if your father or mother or any brother, sister is going to be a co-applicant, check the credit scores beforehand. And if there is something that is misreported or something that is incorrect, correct it. So pay your debts on time. That's the most important thing. Second thing you should look at is what kind of courses are you going to apply for, and the employability of those programs, because that's also critical. Like, I might have an interest in ABC, in some esoteric course in some other country, but does that have employability or not? Because that is also a factor I will consider as a lender to decide whether you can get a loan or not. Right. So those two things definitely I would say are very, very important, and things you have to keep in mind as you go about your thing. So we have a question related to credit score, what we're discussing. And so it's from Shivang. The question is, does credit score in India work for global applications? Sure. Great question. So actually, typically what happens is credit scores are not generally transferred across geographies. And I would say generally, because there are exceptions. But typically what happens is if you have an Indian credit history, that is only applicable for Indian lenders. Only Indian lenders will be able to see. So if I tomorrow go to Spain and kind of the Spanish bank will not be able to access my Indian credit history. But the idea is you are going to take a loan. Let's say if you're going abroad, you're going to take a loan from one of the Indian lenders. So your credit history, even if you're taking an international, you're actually taking a loan from the Indian lender. And so your credit history will be checked. And these days, even if you're taking a loan from an international lender, the international lender might ask you to furnish a credit report on your own end. So they might say, hey, we can't access it, but why don't you download your credit report and then give it to me? And then the fintech ecosystem, there are some companies that are trying to create basically an interface so that, let's say if I am a lender in the US, I can use that fintech to be able to access your Indian credit score. So there are some players out there, but generally credit reports don't get exported by and large. But that does not mean that you can think, hey, I'm going to get a loan from a lender in the US, so I don't care about my Indian reports. Because, I mean, as a lender, I will understand this. I'll think about this as well. I'm also trying to curtail my risk. Got it. So there is one request from our audience that it would be great we can continue in English. So we can just talk thoda Hindi mein. And actually, I think ये काफी help किया होगा हमारे audience and followers को. So I hope let's get to the second question that we got from our followers. The question is education loan a wise idea for studying abroad? Like, it's a basic question, and we got multiple likes for this question. Is it a wise idea? Sure. तो सबसे पहले तो मैं वही कहूँगा, मतलब मैं एग्जांपल दूंगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा आइडिया है कि नहीं है. मतलब ये सब चीजें होती हैं, वो मतलब पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि मतलब आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप रिस्क ले सकते हो कि नहीं ले सकते. मतलब मैं जब एमबीए के लिए जा रहा था तो मैंने वहां के एक स्पेनिश बैंक से लोन लिया था. एंड उससे पहले मैंने इंडिया में जब आईआईटी के बाद जॉब ज्वाइन की थी तो मैंने एक होम लोन लिया था जब मैंने अपनी पहला घर लिया था. दोनों केसेस में मेरे फादर ने मेरे को बोला था कि लोन ले रहे हो तुम, लोन लेना एकदम गलत बात है, लोन ही लेना चाहिए. राइट. तो मतलब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है. मेरे फादर वाज ऑफ द ओपिनियन कि लोन लेना ही नहीं चाहिए, जबकि मेरा ओपिनियन था कि मैं इससे ये घर खरीद पा रहा हूँ और फ्रैंकली स्पीकिंग इट वर्कड आउट वेल. बाद में मैंने वही घर बेच के अपनी पूरी एमबीए का खर्चा निकाला था. मतलब उसी कारण से मैं स्टार्टअप कर पाया था, क्योंकि अदरवाइज मेरे पास लोन होता, आई वुड नॉट हैव, मेरे पास उतना रिस्क एपेटाइट ही नहीं होता कि मैं स्टार्टअप कर पाऊँ. मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, इसलिए आई कुड गो एहेड एंड डू अ स्टार्टअप. राइट. बट वो तभी हो पाया था क्योंकि मैंने एक लोन लिया था, उसके कारण मेरे को कुछ रिटर्न मिला था.
तो हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है, रिस्क परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अब उसके बाद कहाँ कहाँ पे मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा कि लोन लेना अच्छी बात है। तो दो तीन फायदे होते हैं, एंड स्पेसिफिकली एजुकेशन लोन का तो एक फायदा ये होता है कि सेक्शन 80 बेनिफिट जो मिलता है। तो सेक्शन 80 इंटरेस्ट रेट्स एंड के इंटरेस्ट रेट रिबेट मिलता है अगर आप इंडियन बैंक से लोन ले रहे हो। तो बेसिकली अगर लेट्स से मेरे पिताजी अगर 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट पे हैं, तो वो लोन का अगर रिपेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का, तो उनको 30% बाद मिलता है। एंड ये हम लोग देखते हैं कि काफी एचएनआई क्लाइंट जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स होते हैं, काफी एचएनआई क्लाइंट्स लोन बस इसीलिए ही लेते हैं कि उनके लिए ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, एंड वो यूज करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपके यूज केस एक ये बेनिफिट हो सकता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो एज अ स्टूडेंट आपकी अब क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है। तो राइट। आ, कल को फ्यूचर में आप कोई लोन लोगे, तो जब नया लेंडर आपकी हिस्ट्री चेक कर रहा है तो देख रहा है कि हाँ भाई आपने इतना इतना लोन पे किया, तो आपकी एक सर्टेन सिविल स्कोर बन जाएगी। उसके कारण आपको बेटर प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे, कम रेट्स पे मिल पाएंगे। तो वो दूसरा बेनिफिट होता है। एंड स्पेशली इंटरनेशनल कंट्रीज में, तो मतलब यूएस में व्हेन आई वाज वर्किंग, तो यूएस में तो देर आर मतलब ऐसी सोसाइटीज होंगी, रेजिडेंशियल सोसाइटीज होंगी, जहां पे आपकी अगर क्रेडिट स्कोर नहीं है तो, या अच्छी नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगी जगह रेंट पे। आपके पास जितने भी पैसे हो, डजेंट मैटर, आपको रेंट मिले पे वहां पे रह नहीं पाओगे आप अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है। तो वो क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के लिए का भी एक माध्यम है। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि जो मेरे को लगता है पर्सनली, कि एक तरह से एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो आता है कि मतलब एक है कि मैंने अपने पापा का पैसा लिया और मैंने पढ़ाई कर ली, दूसरा है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। हाँ, हो सकता है मेरे फादर इज अ को एप्लीकेंट, बट मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग वो मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरे को अभी से सोचना है कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो तो मेरे हिसाब से वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के लिए इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। लाइक मैं, हाँ, तो आई थिंक मेरे लिए दिए तीन पॉइंट्स हैं जो मेरे को लगता है जिस कारण से आई थिंक इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। राइट। प्लेसेस वेयर इट इज अ बैड ऑप्शन आर प्लेसेस लाइक कहाँ पे खराब हो सकता है। एक, जैसा मैंने कहा कि आप कोई कोर्स करने जा रहे हो जहां पे एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बहुत कम हो, आपको पता है वो, एंड लेट्स से you don't have the financial support from your family में, you're not from a financial well off background, उस केस में मेरे हिसाब से तो पहले आपको सोचना ही पड़ेगा कि आपको वो कोर्स करना भी है कि नहीं करना, राइट? बिकॉज अदरवाइज आप कोर्स कर रहे हो, आपके पास ऑब्लिगेशन भी है, आपकी सरदर्दी बढ़ गई है, मतलब किस लिए आप कर रहे हो, वो आपको बहुत अच्छे से सोच के करना पड़ेगा। तो वो केसेस में मैं कहूंगा कि एक बार आप सोच लो कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो, कैन यू टेक ऑन दैट एक्स्ट्रा प्रेशर और नॉट। That राइट। is one case where I will definitely say that you should think multiple times before taking an education loan. एंड सेकेंडली सर, लाइक जस्ट एडिंग टू योर पॉइंट, जो हमने कॉलेज में देखा है कि लोग एमबीए के लिए जब जा रहे होते हैं, सो इट्स लाइक लोग इफ दे आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ लोन, देन दे थिंक कि व्हाट इज द आरओआई फॉर दैट। अगर इंडिया में कर रहे हैं तो दिस इज द एवरेज प्लेसमेंट जो वो कॉलेज में मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो फैक्टर एज यू मेंशन कि कौन सा कोर्स कर रहे हैं, व्हाट इज इट्स वैल्यू प्रोपोजिशन, क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें आफ्टर एंड ऑफ 2 years मिलने वाला है। सो दीज आर द Right. थिंग्स which definitely helps, right? Actually, this would actually help our audience. So thank you so much, sir. And let's get to another question. The question is how global education infrastructure has changed post COVID. So I think we can have a good discussion on this. काफी अच्छा Sure. topic है. Sure. So uh, I think in some cases it hasn't changed a lot, and still it has changed a lot. What I mean by that is कि like जब COVID hit किया था, तो instantly I could hear a lot of folks saying कि अब तो मतलब completely online ही होगा, and हमें तब भी कंफ्यूजन हो रही थी कि मतलब कैसे हो पाएगा, या आर वी रेडी और नॉट। आई थिंक, एंड उसके बाद ऑब्वियसली उस समय बूम हुआ था मार्केट्स में, एंड उसके बाद बस्ट भी हो गया है कुछ सेगमेंट्स में। आई थिंक जहां तक बात आती है कि क्या क्या चेंज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, तो आई थिंक एक चीज जो है वो मानसिकता में ये बदलाव जरूर आया है कि पहले आप अगर किसी यूनिवर्सिटी से बात करते तो मतलब ज्यादातर यूनिवर्सिटी ये कहती कि मतलब रिमोट एजुकेशन हो ही नहीं सकती। अब एटलीस्ट मानसिकता में ये बदलाव जरूर आ गया है कि कुछ कुछ चीजों
के लिए रिमोट एजुकेशन चल सकता है। हम्म, एंड आई थिंक सही आंसर भी वही है कि आई डोंट मतलब देयर इज अ वैल्यू टू मतलब वो जैसे इवन इन वर्क सेटिंग्स रिमोट वर्सेस work from office. I am currently right, in the office today as well. So मतलब वो I think there's a lot to learn through human interaction, through social interactions. So I don't necessarily think कि मतलब वो online only is the answer. But that does not mean कि सब चीजों के लिए मुझे एक क्लासरूम में एक लेक्चर हॉल में बैठना जरूरी है। तो आई थिंक वो मानसिकता में बदलाव डेफिनेटली काफी आया है। And so even in the top universities we have seen they were forced to basically what could have happened in over a space of 10 to 15 years probably both in finance sector and in education sector because both those sectors would not have accepted technology if COVID had not happened. They would have true, resisted it for ever and ever. But true. yeah, I mean, COVID forced them to take alternatives, and that's why we've accelerated certain things which would not have happened otherwise. Hmm, So I think from an exactly. infrastructure standpoint, ये definitely change हुआ है. दूसरा एक change जो I think will happen over time is कि at least the last couple of years वो upskilling वाला segment काफी बड़ा आया है. कि लोग अब people who are working are looking at upskilling themselves. So I think going forward, and that has not completely manifested अभी तक, but what मुझे जो लगता होगा फ्यूचर में is कि जो ऐसे कि sachetization of education होगा कुछ हद तक कि मतलब rather than going for a long 3-year course, 4-year course, 2-year course, maybe people will एक तरह से सब्सक्रिप्शन सर्विस हो जाएगी कि मतलब मैं एक यूनिवर्सिटी का सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ अब मैं 3 महीने का एक कोर्स कर रहा हूँ फिर मैं थोड़ी देर काम करूंगा फिर मैं 1-1.5 साल बाद 3 महीने का और कोई कोर्स करूंगा दैट्स माय गेस बट दैट्स इट Right. So yeah, मतलब as you mentioned about the points कि it's not necessary कि classroom में जा करके हमें वो particular चीज के बारे में जानना जरूरी है. So I think उस चीज में college students जो हमारे community में वो काफी relate कर सकते हैं. So initially like even in my case, sir कि पहला जो first year था campus का that was online, completely online. So हमें we used to just हमें सिर्फ सुबह सुबह 8 AM क्लासेस जो होती है वो हम अपने बेड पे लेट करके क्लासेस अटेंड कर रहे हैं जो क्विजेस के टाइम पे पढ़ना हुआ सो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते थे सो ऑल दोस थिंग्स वर हैपनिंग बट वो कैंपस में आने के बाद वी गॉट टू नो कि हाँ वो ऑनलाइन भी चल रहा था एंड यहाँ पे आने से क्लासरूम में आने से इट्स नॉट कि हाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया सो देयर ऑब्वियसली डिफरेंस इन द एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड द थिंग्स दैट यू इंटरेक्ट विद योर सीनियर्स एंड ऑल दैट बट एजुकेशन वाली चीजें उतना ज्यादा वी डिडंट फेल्ट कि हाँ फर्क पड़ा ऑनलाइन में एंड देन क्लासरूम में राइट सो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप्स हमारे केस में स्टूडेंट्स के केस में इट्स लाइक काफी लोग कोर्सेज भी करते हैं विद द सेमेस्टर्स एंड ड्यू टू कमिंग ऑफ द कल्चर ऑफ वर्क फ्रॉम होम तो सेमेस्टर्स के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं सो ऑल दीज थिंग्स Yep. आई थिंक काफी ज्यादा एक डिफरेंट थिंग जो कि हमें मिला आफ्टर कोविड Yep. राइट सो let's get to another question, sir. So the question is, what do you think is the exact status of scholarships for students in India? Um, so status, as in, I would say pretty much there are multiple scholarships available. I think the problem with scholarships, and this is something जब हमने start किया था ज्ञान तब भी हम struggle कर रहे थे, and हमने कुछ develop किया था. We are in the process of reformatting everything एक तरह से, taking a new approach to it. But I think what problem जो हम लोग को समझ में आई थी is कि discovery की बहुत बड़ी problem है, and that still remains to be a problem. And so and उसके multiple reasons हैं, but मतलब point is कि like if I talk about let's say number one, it's an awareness problem in the sense कि अब Tata scholarship है for students going abroad. Many people who are applying for abroad education also don't know कि Tata scholarship, Tata की कितनी scholarships होती हैं abroad के लिए, right? And बहुत बार होता है कि they get to know it much later in the journey. Similarly, multiple scholarships जो aware exist करती हैं, हर साल exist करती हैं, उनका ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन नहीं है या अगर कोई प्रोसेस है तो चलता नहीं है या अगर ऑफलाइन भी है तो भी वो कहाँ ढूंढे क्या एग्जैक्ट प्रोसेस है
बिकॉज देर आर मेनी स्कॉलरशिप्स जिनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट्स लाइक एक एक दो दो साल पुरानी है। तो मतलब मेरे को अब फोन करके पता करना पड़ेगा मेरे को कहाँ पे भेजना है, कब तक डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो वो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा दूसरा डिस्कवरी का, एंड इफ आई टॉक अबाउट स्कॉलरशिप्स इन जनरल, तो मतलब स्पेशली इन द स्टडी अब्रॉड सेगमेंट काफी स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो कोर्स स्पेसिफिक होती हैं या प्रोफेसर स्पेसिफिक होती है। प्रोफेसर के पास ग्रांट होगा, प्रोफेसर एक नई स्कॉलरशिप स्टार्ट कर सकता है, यहाँ कुछ किसी के साथ थ्रू लॉन्च कर लेगा। तो इन दोज केसेस लाइक वो ग्रांट कैसे एक्सेस करेंगे आप, वो ग्रांट की अवेलेबिलिटी कहाँ है, कहाँ लिस्टिंग है। So those things require a lot of regular work, and I think that is something that is still missing in the ecosystem. What has happened well, to a large extent, is कि जो I would say need based scholarships होती है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट स्कीम्स पे scholarships हैं, उसके लिए now there are government websites जहाँ पे there is a lot more information than there was like I would say 7 years ago. So if you are belonging to a certain income group or a certain segment strata of society, or you have certain qualifications, you can search and you can get hey, I qualify for this scholarship in India or outside of India, right? So that information asymmetry is gone to a large extent, and उसकी काफी वेबसाइट्स अब आ गई हैं, गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बट आउटसाइड ऑफ दैट अभी भी काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एंड इवन व्हेन आई से गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी हैं, तो यस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी लिस्टिंग होगी। बट अब स्टेट ऑफ बिहार का, झारखंड की आप बात कीजिए, झारखंड में उन्होंने कोई 4 नई स्कॉलरशिप्स लॉन्च की हैं कि भाई हम चाहते हैं हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाएं, उसके लिए हम नई स्कॉलरशिप लॉन्च कर रहे हैं। अब उसके लिए मैं कहाँ से उसको पता चलेगा मुझे, क्योंकि वो उस सेंट्रल गवर्नमेंट में लिस्टेड नहीं है या कोई तरीका नहीं है। तो आई थिंक दैट इज स्टिल द डिस्कवरी इज स्टिल अ प्रॉब्लम। एंड आई थिंक उसमें मेरा एडवाइस हमेशा यही रहता है कि लाइक that is the reason why you have networks, that is the reason why you talk to people. That is why that whole human interaction is very very important, क्योंकि वो बहुत बार इन सब चीजों से अवेयरनेस पड़ जाती है। मतलब until unless chat GPT solves every problem in my life, at which point in time I will be redundant. But yeah, I think uh, talking to others, talking to seniors, तो आप कहीं पढ़ने जा रहे हो तो talking to folks there, talking to the professors there, that's very very critical. And that is something we typically see students don't do that. मतलब वो fear factor होता है कि मतलब पूछेंगे तो पूछने में पता नहीं क्या तो हुआ है, मतलब क्या तो हो जाएगा, अगर हम पूछेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पहाड़ टूट पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो बस ना पूछने के कारण ही हम काफी अपॉर्चुनिटीज मिस आउट कर जाते हैं। Yeah, that's actually a very big thing कि आपने I was going to ask you a follow-up question कि इन scholarships का discovery में क्यों लोगों को challenges लगता है या फिर क्या चीज मिसिंग है, but you covered that. But हाँ, this is actually a very big thing कि पूछना जरूरी है काफी ज्यादा, and if you ask about your queries to anyone, your seniors, your mentors, your teachers, then आधी चीजें clear हो जाती है, and I think थोड़ी चीजें खुद से figure out करते करते get the full complete vibe of that particular Yep. thing. So yeah, so I think मतलब मेरी भी कुछ इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कुछ अपने दोस्तों से, कुछ अपने कजन से बातचीत हुई थी कि स्कॉलरशिप के लिए काफी लोग स्पेसिफिकली इंजीनियर्स, उनका होता है कि आफ्टर बीटेक एमबीए करना है एंड दे टारगेट फॉर दैट आईवी लीग एंड बाहर जाकर के बड़े कॉलेजेस में एमबीए करना है। सो मैं एक सर्वे ले रहा था कैंपस में कि कितने को पता है कि कुछ स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती है नहीं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग काफी लोग थे जिनको आई वुड से 90% लोगों को नहीं पता था कि क्या स्कॉलरशिप हो रहा है, किस तरह से वर्क करता है, हाउ टू बेसिकली गेट ऑल दीस थिंग्स। हाँ, इट्स अ गैप, बट आई थिंक हाँ, Right. people need to be aware about it, and Right. I think yeah, that's it. Right. So again, that is something, because as Gandhan, I mean, our objective, we are focusing on education loans, but our objective is solving education financing, not Right. solving education loans only. So that is something we still are figuring out the right ways. And yeah, we'll be happy to work with someone in this group, or someone from campus, or someone who can figure out or help us solve that problem. More than happy. Yeah, definitely I'll connect you with anyone of them from the IT. Sure. Yeah. So let's get to another question, sir.
So the question is, it was from a final year undergrad student. How can he do? What can he basically do to improve his chances of getting scholarships in future? Like we covered a Uh, topic on loans, how you can, as you mentioned about credit scores and yes. everything. Now it's about the scholarship. So first thing is obviously जो फर्स्ट ईयर में भी आपको पता होना चाहिए था कि grades matters. Okay, It's now not I like realize it grades much don't. more. It's not like grades don't matter. The grades matter. Right. Uh, uh, so if you are in last year, तब भी जितना भी pull up कर सकते हो आप करो. But I think mainly कहाँ पे फर्क पड़ जाता है इज मतलब बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे दो तीन तरीके की स्कॉलरशिप्स होती हैं. एक स्कॉलरशिप होती है जैसा मैंने कहा नीड बेस्ड. तो वहां पे तो क्लियरली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वो आपको पता होनी चाहिए एंड उसके हिसाब से आप सर्च करो कि भाई गिवन योर फाइनेंशियल स्टेटस व्हाट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स कैन यू क्वालिफाई फॉर. So that's number one. But when it comes to merit scholarships or merit cum means जो कहते हैं, so basically where merit is a criteria. So there it's almost क्योंकि आपको आप अपना resume कैसा बना रहे हो. And I'll take an example from way back in 2007 जब हम graduate कर रहे थे college से undergrad colleges से. We had a colleague हम लोग का एक batchmate था, didn't have a great CGPA grades, but उसने जो फाइनल ईयर का बीटीपी प्रोजेक्ट था उसमें उसने प्रोफेसर के साथ बहुत अच्छे से काम किया हुआ था एंड ही हैड डन अ फैबुलस जॉब एंड हिज एंटायर एप्लीकेशन वाज प्रीटी मच रिकमेंडेड बाय द प्रोफेसर एंड सो उसको पूरी स्कॉलरशिप डेस्टिनेशन यूनिवर्सिटी से मिली थी बिकॉज जो प्रोफेसर थे उन्होंने जिस डेस्टिनेशन यूनिवर्सिटी थी उन्होंने एक लेटर लिखा एंड लाइक इट वाज लाइक कि उसको 3-4 जगह से खुद से कॉल आ रही थी कि मतलब आप प्लीज यहाँ पे आके सेम रिसर्च कंटिन्यू कर लो. तो आई नो कि मतलब टिपिकली टेंडेंसीज होती है कि हाँ मतलब प्रोफेसर्स आर समवेयर एल्स यहाँ मतलब नहीं करना है बट मतलब एट द एंड ऑफ द डे दे आर योर फ्रेंड्स एज वेल and they are your mentors and they are there to help you. They not really have an intention to just berate you or something. They are there to really help you out. Right. So yeah, so understanding making friends with them or understand I won't say and I wouldn't even say making friends with the intent of getting a scholarship but matlab, if you do good work, good things will happen to you. So in that particular case, the guy did a good BTP project. He solely focused on that and he got the results. So I think for final year students, I'll say focus on your BTP, kind of build a good resume. Now it could be by grades, it could be by BTP for MBA. I know people do social work or put something on their resume and stuff, but it boils down to how do you make a better resume. So in the final year, if you're directly planning to go, you're probably directly planning to go for an MS. And in that case, as I said, मतलब course work matters a lot. अगर आपका प्लान है कि 2-3 साल पढ़ के फिर एमबीए करना है, then the whole idea is कि मतलब ठीक है आप अभी बस ग्रेड्स मैटर करेंगे बट नेक्स्ट 2-3 साल अपनी जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो वहां पे एक अच्छी ट्रेजेक्टरी दिखाओ, अच्छी ग्रोथ दिखाओ. दैट इज व्हाट विल गेट यू द मेक द डिफरेंस. And the other thing I'll say is, one thing I'll definitely say is apply sooner than later. Because that is another problem कि scholarships limited होती हैं. And especially when it comes to the funds that a professor will have or someone will have, if you're applying in the third cycle, second cycle, fourth cycle, your chances is decrease. And again, if I take the example of the MBA schools, so just you said कि you're one of your friends, so if it's a male candidate, then it's a male Indian engineer candidate. I mean, sorry, fact of life is you are the most common group out there. तो आप अगर second, third round में apply कर रहे हो MBA के लिए, तो good luck getting a scholarship. Right. I think So I've seen you the need to intern. know. Sorry. I've seen the intern season. I was just saying that I've seen the intern season and I basically get the vibe. I got the vibe. Basically, what are you talking about? Right. So The fit. it's a fact of it's a fact of life. I mean, an MBA school has to have diversity and other things. Yeah, they've pretty much gotten all Indian MBA engineers in round one. So yeah. Yeah. So I think
there's one question that is from my side. Like I was Yeah. thinking, yeah, I have to ask it. So, sir, question is कि जब आप आईआईटी कानपुर में थे एंड या फिर मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो आपको कोई एक पर्टिकुलर ऐसा इंस्टेंस आपके साथ ऐसा हुआ देन यू फेल्ट कि दिस इज अ गैप इन द मार्केट एंड देन यू थॉट ऑफ स्टार्टिंग ज्ञानधन व्हाट वाज देयर अ पर्टिकुलर इंस्टेंस या फिर कुछ कुछ चीजें बिल्डअप होते होते देन यू थॉट ऑफ डूइंग द स्टार्टअप नहीं, तो जैसा मैंने कहा कि लाइक आई थिंक सो कानपुर में आई थिंक guys didn't know the in हेलो कि हेलो या ये हेलो वॉइस थोड़ा सा लैग या कर रहा था हाँ सॉरी नाउ इट्स हाँ क्लियर so I was saying was कि मतलब I got lucky getting out of college कि I got placed at Capital One uh, because हाँ मतलब 4 years I didn't think कि I didn't know कि CGPA है so I would say I got lucky उस समय I had no idea कि I'll do something on my own. All I knew was कि I'd learned a lot of life skills in sports sector. So I wanted to do something in sports sector in India, and that is the reason why 6 साल Capital One में काम करने के बाद I went for my MBA. And so उस समय I was very clear कि मैं MBA करूंगा, मैं यूरोप में काम करूंगा 1-2 साल स्पोर्ट्स सेक्टर में, and that is the reason why I even chose the school in Barcelona. And then I'll come back to India to start something in this sector. बट जो इंस्टेंट आया हुआ एज आई सेड मेरा जब एडमिशन हुआ था तो अचानक से उस समय फेसबुक ग्रुप्स वर मोर कॉमन तो फेसबुक ग्रुप्स पे इंडियन स्टूडेंट्स वर गॉटन एन एडमिशन वर पुटिंग इन की सो टिपिकली टॉप 20 बिजनेस स्कूल्स में होता ये है कि यू गेट अ लोन सब 20 स्कूल्स का एक लोकल बैंक से टाई अप होगा जैसे स्पेनिश बैंक के साथ एक टाई अप था तो स्पेनिश बैंक ही लोन्स करते थे फिर बट हमारे साल में ये हुआ था बिकॉज इट वाज स्टिल आफ्टर द ग्रेट रिसेशन so the banks stopped giving out loans to Indian students. So suddenly there were a lot of students figuring out कि कैसे लोन देना है. Some were figuring out कि भाई do we have to sell off our property or what not, blah 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 सबके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में देख रहा था. And that is when I thought कि यार मतलब कैपिटल वन में हम लोग रिस्क बेस्ड प्राइसिंग करते थे कि मतलब assess the future risk and then make loans basis that. Why can't it happen in this space? And श्योर इनफ एमबीए में काफी क्लासेस होती हैं सब क्लासेस में डिस्कशन केस स्टडीज होती है तो डिस्कशंस हो रही होती हैं तो वन ऑफ दोस केस क्लासेस में मेरे लिए ये हम लोग वी वर डिस्कसिंग हाउ टू सॉल्व आई डोंट रिमेंबर एजुकेशन प्रॉब्लम्स इन सम अफ्रीकन कंट्रीज एंड दैट्स व्हेन आई सेड कि यार मतलब ये कहानी मतलब ये या ज्ञानबाजी से कुछ नहीं होगा मतलब लेट्स ट्राई इट आउट मेरे को ये प्रॉब्लम दिख रही है कि हाँ भाई मतलब आपकी काबिलियत पे लोन मिलना चाहिए let's try it out. If we can solve it, great. If we can't solve it, I will know 10 ways not to solve it, and probably someone else can come in and do 10 other things. But at least I will be in a place where I know why it does not work for 10 odd scenarios. So that is really how it started. That was my moment of reckoning. I realized कि मतलब now or never. मतलब अभी कर लेते हैं. मतलब wait किस चीज की कर रहे हैं. मतलब so that was the whole thought process. राइट राइट सो मतलब आप जब एमबीए कर रहे थे देन यू हैड दैट Yeah, इंस्टेंस या फिर लुकिंग एट योर फ्रेंड्स एंड yeah, in some sort doing the case studies and that real life yes, class discussions yeah. and all that things. Yeah, it's actually great. Yeah. So that's why I started thinking about or doing some planning during my business school studies days. Actually, I also did part-time work for a company based out of Latin America, which was in education financing, just to gain some experience. And then the day my MBA course was over was the day I took a flight back to India. So I didn't even attend my graduation because I said कि मतलब अब Okay, solve करना है तो अभी से start कर लेते हैं. Yeah. okay, great. Yeah, that would actually help. Always. So I think we have one questions in the comment. There was one question related to there is any like if you're aware about it, ki, does us do we have any specific arts scholarship for art student, right? So he has written he's not into academics too much, so maybe he can help him out. सर क्या हम आर्ट वालों के लिए कोई स्कॉलरशिप होती है क्या आई एम नॉट गुड एट स्टडीज सो अगेन मैं वही कहूंगा कि मतलब
घूम फिर के बात आपके रेज्यूमे पे आती है, और घूम फिर के बात आती है कि आप क्या करना चाह रहे हो। मतलब, क्योंकि आर्ट भी आप बहुत ब्रॉड चीज बोल रहे हो। हम्म। अ, मतलब तो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। क्योंकि जब आपको वो पता चल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो, तो वो जो कहते हैं ना, सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। वो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको किससे बात करनी है। बट पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आर्ट में स्पेसिफिकली आप क्या करना क्या चाह रहे हो आप। तो मतलब, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक आई हैव टू चेक, बट आई थिंक मेनी ऑफ द जो फाउंडेशंस की स्कॉलरशिप्स होती हैं, द केसी महिंद्रास, द टाटास, आई आई एम नॉट श्योर, सम ऑफ देम हैव अ रिक्वायरमेंट कि स्टेम कोर्सेज होने चाहिए, बट सम ऑफ देम डोंट हैव दैट रिक्वायरमेंट। सो आई वुडंट से कि ऐसा ऐसा नहीं होता कि सारी स्कॉलरशिप भाई बस इंजीनियरिंग के लिए ही मिलेंगी या मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के लिए ही मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर ऐसा होगा तो देर विल बी स्पेसिफिक फाउंडेशंस जो आर्ट्स के लिए स्टार्ट करेंगी। सो देर आर स्कॉलरशिप्स एक्चुअली, बट आपका क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत ब्रॉड है। तो आप पहले स्पेसिफिकली ये सोचो कि आपको करना किस चीज में है, एंड उसके बाद आपको स्पेसिफिक आंसर अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। Yeah. Thank you so much, sir. Like let's open the forum for the audience. अगर किसी को कुछ question है, you can post it in the comment section, right? And will just किसी को कोई doubt है, कोई question if you want to ask, you can just post it. Just one last topic that I would like to discuss upon, sir. What do you think? How important is personal finance these days, considering the age group 2025? I mean, finance is important at every stage. I think. Oh, I think people say that. Like, I think and I talk to. मतलब we as क्या कहते हैं? I don't remember किस क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, बट मतलब वो Right. वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बट वो फिर उसके बाद उनको कंपाउंडिंग फिर भी नहीं समझ लगती है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू कि ओ आपका डेट पोर्टफोलियो इक्विटी मिक्स इतना होना चाहिए, या आपका इतना परसेंटेज सेविंग्स इंटरेस्ट होना रेट सेविंग्स होनी चाहिए। मतलब ठीक है, काफी बुकिश ज्ञान है, बहुत जगहों पे वो होता है, बट एटलीस्ट आई जस्ट रिपीट व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय फादर बेसिकली, एंड माय फैमिली बेसिकली बीइंग इनटू बिजनेसेस। की मतलब आपकी खुद की आपको अपना खुद का बही खाता बनाना चाहिए, आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप Right. कितना कमा रहे हो और कितना खर्चा कर रहे हो। दैट अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, इन माई माइंड कंपाउंडिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आई थिंक दोस टू इन माई माइंड आर नॉन नेगोशिएबल्स। उसके बाद oh, it's 100 minus age is equity investment or some random stuff like that. I don't, yeah, oh, just in funds, yeah, stuff. All those are good to have, but the biggest issue is when people don't understand what their income and expense is. Next one. That is true at an individual level, that is true at a company level. Uh, that is why we are seeing what we are seeing right now. Right. Right. Yeah. Actually, very true. And don't Um, benchmark yourself against others. Sorry? Don't benchmark yourself against others. Know what Hmm. your interest, वही मैं जो what you asked me कि education loan अच्छा है कि नहीं है. First of all, understand आपको क्या चाहिए. उसके लिए don't try to see what 10 of your friends are doing. First, understand yourself first, and then try to make plans according to your expectations, your interests, your comfort, rather than oh, I've seen those tweets of just drinking one Starbucks coffee and इतना पैसा डाला होता तो आप ये कर लेते, या ओ renting a house is a good way, buying a house is a bad investment. I think because of ज्ञान it's good for becoming a influencer, but मतलब basics are more important. Right, right. Basics. Sure. Back to basics that like there was a moment I think people were talking about कि हर चीज को people are like complex
मतलब स्पेसिफिकली इस एज ग्रुप में आकर के चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते रहते हैं एंड दे फॉरगेट द बेसिक्स. वो उस चीज़ पे स्टिक Yeah. रह करके स्पेसिफिकली फाइनेंस में तो काफ़ी ज़्यादा है ये चीज़. वी शुड फॉलो एंड अपने गोल्स को उसके हिसाब से वी शुड फ्रेम इट Yeah. अकॉर्डिंगली. And the only caution is if it sounds too good to be true, then it is going to be a fraud. If someone is promising you a 60% return, uh, and he or she says कि मैंने बनाया है या मेरे भाई ने बनाया है, मेरे दोस्त ने बनाया है, and अगर आपको एक महीने मिल भी जाता है तो get out. It will never end up well. So if it is too good to be true, then it is too good to be true for a reason. It is by and large a fraud. Simple as that. Right. Great. Thank you so much, sir. So, just one last piece of advice, or just what you want to say for our community and for our audience who were today in the live. And so I think the last question that you asked, I think that is the perfect way to summarize it in my mind. I think people should know, people should first spend time to know their uh, risk levels, their wishes, wants, needs, वो segmentation होनी चाहिए, and then start planning according to that. Yeah, what I've learned is benchmarking against others so you should benchmark yourself against others. That is why you have ranking systems and so on and so forth. It's important to do that, but that should not be the sole driver of your existence. Right. Great. Yeah, actually, that's really helpful. Thank you so much, sir, for being over here. I would also Thank you. like to thank my followers and audience for the session. And yeah, it was really great to have you, sir. And I hope we'll be Thank you. joining soon. And thank you again from Financially Aware Bharat. And let's wrap this session. Thank you so much. Thanks. Thank you so much. Yeah. Bye. Bye.